है असर तेरा दिल बेखबर बेखबर मेरा. मैं हूं विवेक एंड दिस वीक्स ऑफ माय प्लेलिस्ट आर्टिस्ट ऑन कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन यानी कि रेडियो वाले 106.3 एफएम इज दिस सिंगर सॉन्गराइटर फ्रॉम द हिमालयाज who is a self-taught guitarist and producer as well. He's known as Semwal. Shubham Semwal, welcome to Radio Olive. Hi, thank you so much, Vivek. It's a pleasure to be here. You started writing songs and making YouTube covers in 2016 is what I got to know. आपकी म्यूजिक जर्नी एक्चुअली स्टार्ट उससे पहले से हुई थी? हाउ वाज इट? हाउ So हैज इट बीन ऑल दिस व्हाइल? so I've been a musician since I remember, since I was a child, because my mom is a classical singer. ओके. So it's kind of in the family. छोटे से ही I used to do it since I was a kid, but I never really thought of it as something I do as for money or as a career. Of course, always kind of stayed in that hobby wala zone. In school, I think music पे ही मैं majority time निकालता था. Like I'd be playing piano, practicing band, all of that. But I guess it's kind of also like an Indian parent thing, and you just push your child की engineering करो, you're bright, तुम पढ़ाई करो. I did my engineering from Peck. That is kind of when I started drifting towards the possibility of music as more than just a hobby, because Okay. I feel because I feel, especially in India, compared to schools, colleges is हाँ. kind of where you kind of get that sort of that atmosphere and that Hmm. amount of support, and you kind of opens up your brain, you meet people, you see how things are going. So yeah, that was around the time. So 2016, I was in my final year of engineering at Okay. that time, and that is kind of when I kind of became really, really serious for it, and I thought ki, I think this is something I am really good at, and something I should really give all my time and devotion to. And that is kind of when I decided I should just go all in. But then once I graduated, I had to take a decision if I should go full time to music or not. And then again, there was kind of like that tussle in the family, and then I went ahead and I took a job. Yeah, so again, for like 2 years I was working and I was doing music part time. But for me, kind of like the whole COVID thing was like a blessing in disguise, because I just quit my job, and since then I am a full-time Pursuing music. musician. Okay. Amazing. Amazing. And this week's Off My Playlist track has a very different vibe and sound to it, and it's called Asar Tera. That's your latest release as well. Firstly, Yeah. इस गाने का genre क्या है? Because it's a very different sounding track. And इंडिया में ऐसे tracks usually अभी तो especially in the indie scene कोई बना नहीं रहा है. तो ये गाना कैसे बना है? And how did you think about it? And genre के बारे में कैसे सोचा कि इसको ऐसा sound देना है? So every musician, every artist, उसकी कुछ क्या कहते हैं inspirations होती हैं. There are some musicians आप जिनसे बहुत relate करते हो, आपको लगता है इनका music मुझे बहुत पसंद है. So there is this artist called Tom Misch. Okay. I listen to his music a lot. He's from the UK. So in the past few years, there has been this resurgence in in R&B music. So basically R&B, कह सकते हैं it's inspired from jazz, and then there is also एक नया जॉनरा बन गया है. उसको बोलते हैं नियो सोल. तो नियो सोल को एक तरह से कह सकते हैं कि जैसे आजकल लोफाई म्यूजिक बहुत चलता है, हाँ. व्हिच हैज हाँ. लाइक दिस Very वेरी similar डाउन sound to it. Yeah. टेम्पो काइंड ऑफ हाँ. बीट्स, है ना. बट लोफाई में क्या होता है, बीट थोड़ी वैसी होती है, बट द मेलोडिक स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, लाइक अ पॉप सॉन्ग की 4 कॉर्ड टाइप्स. Yes. बट अगर आप जैज सॉन्ग देखोगे तो जैज सॉन्ग जनरली बड़े वेरी कॉम्प्लिकेटेड, उसमें कॉर्ड Yes. चेंजेस होते हैं, Hmm. बड़े मतलब टेढ़े Yes. गाने होते हैं. हाँ. So neo soul is kind of like amalgamation of 2 3 genres. It's like R&B, lo-fi and jazz. तो Jazz. उसमें हाँ. melodically थोड़ा सा अलग जाता है, beat wise थोड़ा अलग चलता है. तो ऑफ कोर्स जैसे मैंने गाना सुना है, इट हैज ऑल दीज थिंग्स दैट यू हैव मेंशन्ड, बट हाउ वाज द राइटिंग ऑफ द सॉन्ग? कि आपने इसको क्या सोच के लिखा था एंड व्हाट वाज द बेसिक थॉट बिहाइंड द सॉन्ग? काफी लोग लिरिक्स पहले लिखते हैं, या एक फील पहले उनके दिमाग में कोई एक थॉट आता है, और फिर वो उसके अराउंड म्यूजिक बनाते हैं. एंड देन देयर आर पीपल लाइक मी, जो आई थिंक ऑफ माई सेल्फ मोर एज अ कंपोजर. ओके. तो आई जनरली कंपोज थिंग्स फर्स्ट. मेरे को हमेशा कोई धुन या कोई ट्यून या कुछ दिमाग में आता है, मैं वो बनाता हूँ. फिर जब वो कंपोज हो जाता है, फिर मैं सोचता हूँ कि मेरे को ये कैसे सुन के लिखूं? हाँ. क्या फील हो रहा है, लाइक हाँ. हाँ. क्या हाँ. इमोशन होना चाहिए. तो मेरा एक फ्रेंड है, ही इज आल्सो अ सॉन्ग राइटर. सो हम दोनों ने मिलके लिखा था. उसका उसका नाम रूप है. सो रूप एंड मी, वी रोट द सॉन्ग टुगेदर. आई रिमेंबर हम बस बीट को लूप पे सुन रहे थे, एंड आई वाज जस्ट सिंगिंग कि तब कुछ चल रहा था. एंड देन उसमें उसने आइडिया दिया था कि it kind of sounds like a very like a romantic, like you're lost and you're dreaming about somebody, and तुम उसको बस बता रहे हो कि तेरा ही असर है, तेरे ही कारण मैं ऐसे ऐसे घूम गया हूँ, कुछ बस कुछ कुछ सोचता रहता हूँ, कहीं कहीं मदहोश सा रहता हूँ. So like that is kind of like my
वे ऑफ राइटिंग की मैं बहुत सोचता हूँ और आइडिएट करता हूँ और सोचता हूँ मुझे फील क्या हो रहा है, एंड आई राइट माई इमोशंस डाउन, एंड देन फ्रॉम दोज इमोशंस आई ट्राई टू गिव इट लाइक कंसाइज लाइंस एंड वर्ड्स कि हाँ अब इसको सॉन्ग के फॉर्म में कैसे लिखेंगे. So before I let you go, if you could just sing few lines of the song, that'll be great. या श्योर, व्हाई नॉट. बातें ये होती नहीं, रातें खत्म ये होती नहीं, देखे ना चेहरा तेरा सुबह तब तक ये होती नहीं, है असर तेरा दिल बेखबर बेखबर मेरा, है असर तेरा दिल बेखबर मेरा. अरे मजा आ गया, मजा आ गया. It's so difficult to just get this song in your head कि आप इसको अगर गाना चाहेंगे at the same time. It's so difficult हाँ because आपने बनाया ऐसे patterns भी, जो आपने बोला neo soul, जो आपने genre बताया है बहुत tough भी है, but it's sounding amazing. So Semwal, हाँ. Shubham Semwal, thank you so much for थैंक यू being सो here मच. on Radio Wale 106.3 FM, man. Thank you for having me. This was amazing. Thank you, Vivek.